ભાવનગરમાં સાવકી માતાએ કરી છે હદપાર, નાનકડી બાળકી પર કર્યા છે ક્રૂર અત્યાચાર। નાનકડી બાળકીએ કહ્યું મને પંખે પણ લટકાવે છે। સાવકી માતાએ માથાના વાળ કાપી બાળકીને પીપમાં પૂરી રાખી હતી। બાળ કલ્યાણ સમિતિ દ્વારા બાળકીનું રેસ્ક્યુ કરાયું। पंखे लटकाड़ती मारी दीकाने क्यारे पंखे लटकाड़ी थी तने पहला तो तार पप्पा ने कहीं कहता तार पप्पा ने खबर है पंखे लटकाड़ी थी एम एने खबर है तार रेवू नथी ने भेगू तने जम्मा आपता था जम्मा आपे नहीं जम्मा नथी आपता ने तू हाथे नाती थी ने तारा कपड़े हाथे धोती थी ने तू कपड़े हाथे हुकवती थी ने वासण उटकावता था ने तारी पासे कचरा पोताई करावता था ने बधुं काम तने करावता था ने बधा तो भूखी राखता था ने तने केम खबर से हूँ अगाशी में मारे डेली हालवानो टाइम छे हूँ हालती होय ने तो आ छोकरी वासण बार मूकती होय तो एठू पर एठामांथी आ छोकरी खाती थी मारे आंसू होई गया मारे आ छोकरी मारे हुं करूं पछी मम्मी ने बधाने वात करी मैं तो तमारे एक्शन करला छोकरी मरी जाहे आ एठामांथी खाती होय ने बोलावे तो पाછી मोढामां काढीने पाછી अंदर जाय पोतू कचरा कपड़ा बधुं एने जाते करवानुं आटલું બાળક કરીએ કે કોઈ દી જાતે સ્કૂલે હરકા નથી મોકલતા સ્કૂલે તે અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।